Hello students and welcome to my YouTube channel Learn with Nisha ji. So we are studying class 10 chapter 4 for the subject science and we are on topic number 4.4, that is some important carbon compounds that are ethanol and ethanoic acid particularly we are going to discuss. So before we begin the lecture, you can subscribe my channel to get regular updates regarding any video uploads as well as complete the series and complete the chapter and the course, right? See, कार्बन कंपाउंड्स काफी इनवैल्यूएबल है हमारे लिए, ओके? अभी हम दो कार्बन कंपाउंड स्टडी करेंगे जो कमर्शियली काफी इंपॉर्टेंट हैं, ओके? सो व्हाट आर दीज टू? इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, राइट? So let's see the properties of ethanol. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, so try to understand it properly. So ethanol is a liquid at room temperature. अगर आप देखोगे जैसे लैब में ये एक कंटेनर में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, ओके? एंड कॉमनली इसको हम अल्कोहल बोलते हैं, ऑलराइट? इट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, राइट? So in addition, because it is a good solvent, it is also used in medicines, right? Medicines में कैसे, जैसे cough syrups में tincture iodine and many tonics also. Okay. Now ethanol is also soluble in water in all proportions, and consumption of small quantities of dilute ethanol, it causes drunkenness. Even though in practice this is condemned, it is a socially widespread practice. Okay. Now, however, intake of even a small quantity of pure ethanol, अगर आप pure ethanol लेते हो, dilute नहीं करते, it can be lethal. And also long-term consumption of alcohol, it can lead to many health problems, right? अब हम कुछ ethanol की reaction study करेंगे. So let's study this activity first. So we drop a small piece of sodium about the size of a couple of grains of rice into ethanol, बहुत ही small quantity में, ठीक है? Ethanol absolute alcohol ले रहे हो आप, अभी water की mixing नहीं कर रहे हम इसमें, okay? So now we have to observe what happens and a gas is evolved, उसे हमें test करना है, right? Let's see कि ये reaction होती क्या है. तो दिस इज सोडियम, Na आपने ऐड किया है किसमें? इथेनॉल में. इथेनॉल इज CH3CH2OH. तो इसमें जब आप ऐड करोगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? CH3CH2ONA प्लस H2, राइट? तो ये जो गैस इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसमें, ओके? नाउ विद इथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड, दिस वन, okay? Now you have to recall which other substances produce hydrogen on reacting with metals. So you can go to the previous lectures, watch them and try to answer this question in the comment section. Also हाइड्रोजन की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं ये भी आप प्रीवियस लेक्चर से देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ. स्टिल अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पाते, आई लेट यू नो, प्लीज पोस्ट इट, ओके? Now second is reaction to give unsaturated hydrocarbon. Let's see how it happens. Heating ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid results in dehydration of ethanol. Okay. इसमें से वाटर लूज हो जाएगा. ये हमारा इथेनॉल है, इसको जब आप ऐसे ट्रीट करते हो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा और ये इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ओके? नाउ the concentrated sulfuric acid is regarded as a dehydrating agent. Dehydrating means it is removing water from ethanol. ये reaction बहुत useful है, right? Next comes the properties of ethanoic acid. Okay, so ethanoic acid is commonly called acetic acid. Okay, it belongs to a group of acids called carboxylic acids, right? And 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. Vinegar हम सबके घर में present होता है, right? तो उसकी concentration होती है 5 to 8%. And it is widely used as a preservative in pickles also. Okay. The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes during winter in cold climates.
So this gave rise to its name glacial acetic acid. ये भी बोलते हैं इसको. Now, the group of organic compounds called carboxylic acids are obviously characterized by the acidic nature. However, unlike mineral acids like HCl, which are completely ionized, जो carboxylic acids होते हैं, they are weak acids. Okay. So let's see, we can see this through an activity. We compare the pH of dilute acetic acid and dilute hydrochloric acid using both litmus paper and universal indicator. Now, are both acids indicated by the litmus test? Yes, obviously दोनों ही acid ही form में हमारे detect होंगे. Now, does the universal indicator show them as equally strong acids? No. आपको पता है 0 से 7 जिनका pH होता है 7 से कम रहेगा और 0 से ऊपर रहेगा तो वो हमारे एसिड्स होते हैं सब. तो एक एसिड का pH लेट्स से 2 है और एक एसिड का pH है 6. तो हैं तो दोनों ही एसिड्स लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज डिफरेंट. तो ऑब्वियसली दोनों ही एसिड्स की जो pH वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी. और बेटर एसिड कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर होगा और उसकी pH कम होगी एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड. राइट. अगर आपको pH का कंसेप्ट नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके फिर से देख सकते हो. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स. राइट. So let us see the reactions of ethanoic acid. Okay. So first is esterification reaction. This is very important reaction. ये generally exam में पूछी जाती है. Okay. Esters. See, ये categories of compounds होते हैं जैसे ethanoic acid. Okay. Ethanoic acid react करती है ethanol के साथ और generate करती है ester plus water. एस्टर जो कंपाउंड्स होते हैं ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं जैसे परफ्यूम्स में यूज करते हैं इन्हें. ओके. ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स होते हैं. अगर हम ये रिएक्शन लैब में करते हैं और एस्टर फॉर्म होता है तो यू कैन स्मेल अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस. राइट. तो स्टडी करते हैं इसको. एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल. ओके. Ethanoic acid reacts with the absolute ethanol in the presence of an acid catalyst to give an ester. ये स्ट्रक्चर है एस्टर का जो फॉर्म हुआ है और दोनों अटैच हो गए और वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हो जाता है इसमें से. ओके. Now esters are sweet smelling substances. They are used in making perfumes and as flavoring agents also. On treating with sodium hydroxide, which is an alkali, ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. जैसे ये हमने एस्टर लिया जो फॉर्म हुआ था, अगर आप उसे NaOH से ट्रीट करते हो तो क्या होगा? वो सेम अल्कोहल बन जाएगा. जैसे इथेनॉल मिल गया हमें और इथेनोइक एसिड में जस्ट आप H को रिप्लेस कर दो Na से तो ये आपको कंपाउंड मिलेगा इसमें. ओके. So this is the way the reaction takes place. अब हमें थोड़ा रिएक्शन के बारे में पता है. अब आप ये एक्टिविटी को अच्छे से समझ पाओगे. Let's see activity 4.8. So you are taking 1 ml ethanol, absolute alcohol लिया है आपने, and 1 ml glacial acetic acid, along with a few drops of concentrated sulfuric acid in a test tube. ये बेसिकली हमारा कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ओके. तो इस टाइप का आप सेटअप लगाओगे. नाउ वार्म इन अ वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स. ये होता है वाटर बाथ कि आप एक बड़ा बीकर लिया, उसमें वाटर ऐड किया और फिर टेस्ट ट्यूब को ऐड किया उसके अंदर. तो डायरेक्ट हीटिंग नहीं होगी इस टेस्ट ट्यूब की. पहले ये वाटर हीट अप होगा और फिर वो हीट इस टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे ट्रांसमिट होगी. राइट. नाउ pour into a beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the resulting mixture. तो अब आपको पता है बेसिकली आपने एक अल्कोहल और इसको एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड को रिएक्ट कराया है. So it is going to form an ester, right? So if you smell the resulting mixture, it will smell with a very good fragrance, right? Okay. So second reaction, let's see, reaction with the base. जैसे ये हमारा क्या है? इथेनोइक एसिड. आपने इसको रिएक्ट कराया NaOH के साथ तो इट इज गोइंग टू गिव यू CH3COONA plus H2O. Okay. So like mineral acids only, ethanoic acid reacts with the base like NaOH to give a salt.
तो बेसिकली ये हमारा सॉल्ट है, इसको हम सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनॉइट भी बोलते हैं, एंड वाटर, राइट। तो जनरली इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल की प्रॉपर्टीज एग्जाम्स में आती हैं, और जब भी आप कोई केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करोगे तो रिएक्शन जरूर लिखनी है उसमें, तो रिएक्शंस की राइटिंग की प्रैक्टिस आप लिख लिख के ही करो इसमें, राइट। So how does ethanoic acid react with carbonates and hydrogen carbonates? So let's see how it happens. तो जैसे आप इथेनोइक एसिड को लेते हो, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, किसी के साथ भी इट विल गिव राइज टू सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और सॉल्ट जनरली आपका सोडियम एसिटेट बनेगा, ओके। तो आप इन रिएक्शंस में देख सकते हो, यहाँ पे आपने Na2CO3 लिया है, ये कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में ही हमारा सोडियम एसिटेट बन रहा है, वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। So this activity is also based on this 4.9. We set up the apparatus. जैसे आपने 2.5 एक्टिविटी में किया था, अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर, you can go back and see in the series, okay. Then you take a spatula full of sodium carbonate in a test tube and add 2 ml of dilute ethanoic acid. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, you pass the gas that is produced through freshly prepared lime water. तो गैस क्या प्रोड्यूस हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन रहेगी, ओके। नाउ can the gas produced by the reaction between ethanoic acid and sodium carbonate be identified by this test? Yes, you can identify. अगर lime water मिल्की हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। अब आपको सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है, इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट यू कैन टेक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, right? So this is the way we study all the properties of these compounds. So thank you so much for watching this lecture, and subscribe the channel Learn with Nisha ji for more updates. Thanks.